Assalamualaikum, this is Iqra Sheikh. Welcome back to my channel. So now today I am going to start future tenses. So the first tense is future simple, which is also called future indefinite. So this tense is used to talk about things that haven't happened yet, or it is used to talk about an action that will begin and end in the future. यानी कि फ्यूचर सिंपल के टेंसेस हम ऐसे एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अब तक हुए नहीं होते, या फिर ऐसे एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो जो फ्यूचर में शुरू होके वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे. यानी इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर सिंपल को हम ऐसे टेंसेस के लिए यूज़ नहीं करते जो फ्यूचर में स्टार्ट होके वो काम चलता रहेगा. इसका ये मतलब है कि जो काम स्टार्ट होगा वो वहीं पे ख़त्म भी हो जाएगा. And the structure for the positive sentence is subject plus will plus first form of verb plus object. For example, वो अपने अंकल के घर जाएगी. She will go to her uncle's house. मैं खाना पकाऊंगी. I will cook food. सारा अपना काम मुकम्मल करेगी. Sarah will complete her work. Structure for the negative sentence of future simple tense is subject plus will plus not plus first form of verb plus object. वो अपने अंकल के घर नहीं जाएगी. She will not go to her uncle's house. मैं खाना नहीं बनाऊंगी. I will not cook food. सारा अपना काम मुकम्मल नहीं करेगी. Sarah will not complete her work. Structure for the interrogative sentence of future simple tense is will plus subject plus first form of verb plus object plus question mark. For example, क्या वो अपने अंकल के घर जाएगी? Will she go to her uncle's house? क्या मैं खाना बनाऊंगी? Will I cook food? क्या सारा अपना काम मुकम्मल करेगी? Will Sarah complete her work? The last one is negative interrogative sentence, and the structure for this sentence is will plus subject plus not plus first form of verb plus object plus question mark, or we can also write will plus not plus subject plus first form of verb plus object plus question mark. For example, क्या वो अपने अंकल के घर नहीं जाएगी? Will she not go to her uncle's house? क्या मैं खाना नहीं बनाऊंगी? Will I not cook food? क्या वो अपना काम मुकम्मल नहीं करेगी? Will Sarah not complete her work? This is the very simple tense. I hope that you will understand this. Kindly like this video and subscribe to my channel. Allah Hafiz.